शिलान्यास करागला एवं समग्र भारत वर्ष 13टी मेजर पोर्ट ट्रस्ट बा बृहत बंदर सहित ओडिशार आउ एक बृहत बंदर को एठी किभली भाव प्रतिष्ठा कराइबो सेथिपाई योजना प्रस्तुत है एवं आउ गोटे कथा है जे पारादीप बंदर निकटवर्ती अंचल केन्द्रापड़ा एवं पारादीप निकटवर्ती अंचल एक जहाज तैयारी कारखाना एठी प्रतिष्ठा है एवं आज से सब को विचार कले प्रकृत में एठी केंद्र सरकार आम प्रधानमंत्री को नेतृत्व में एठी भारत सरकार को द्वारा तैयारी होतिबा बंदर एवं आमर बेसरकारी उद्योगपति मान को द्वारा अनेक बंदर प्रतिष्ठा करिया पे योजना है ओडिशा जोटा सुवर्ण रेखार कीर्तनिया ठारे अस्तरंग ठारे एक बंदर एवं ता सहित ये बाहुड़ा बंदर प्रतिष्ठा अतिष्ठा ता सहित एथि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार मिलित उद्यम अनेक प्रकल्प किभली ओडिशा प्रतिष्ठा With that good thought, I request our Honorable Chief Guest, Honorable Minister of Industries, Skill Development and Technical Education, Shri Sampath Chandra Swain, to please address the House. Sir. Nation's ambition to enter its maritime Amrit Kaal by 2027, guided by the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi 37. India is set to emerge as a global maritime superpower that is sustainable, technologically advanced, socially inclusive, and that has a future-ready workforce. There is a scope for an investment opportunity of nearly above ₹1 trillion across green shipping, port infrastructure, and maritime services. There will be new shipyards, state-of-the-art ports, and global capital converging on a sector poised to create millions of jobs and stimulate growth along our coastline. Sustainability stands at the heart of this transformation. India is advancing in green maritime corridors, enabling green fuel bunkering, and accelerating the development of zero-emission vehicles at our ports. These initiatives cost and strengthen our global competitiveness, supported by the Sagarmala and PM Gati Shakti programs. India is working to position itself among the world's top 5 shipbuilding nations while securing a 20% share of global ship recycling.